आपको रिमोट कंट्रोल लाना पड़ेगा एक। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। ऑनलाइन जो लोग हैं और आज जो हमारा रेगुलर कंटेंट है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी योर इनपुट which is which is supposed to cover your title, your supervisor name, your research papers as per quality standard, for which I shared a sample PDF file and a presentation which I showed in the last class. So उस perspective से this presentation carries 10 marks. So who is willing to present first in the online Sir, I student? can present. Okay जी, Hamza, Amir. Okay, so Hamza, Sir, let me allow and you can start so that a good standard is set. sir, I have sent the request for sharing screen. I have allowed you. Sir, may I start, please? Just wait a minute. Your presentation is yet not visible to the class. Sir, should I wait more or should I start? आप हमजा एक दफा दोबारा शेयर कीजिए, गेट नॉट विजिबल। सर, मैं करता हूँ। सर, अभी विजिबल? हाँ जी, अभी विजिबल हो गई है। और 1 मिनट और वेट कीजिएगा बस। सर, आई वेट। ठीक है जी, नाउ इट्स विजिबल, यू कैन स्टार्ट। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Hamza Rashid and I'm a PhD student. Sir, Dr. Imran is my supervisor, and I have selected my topic for the upcoming research, which will be starting in the next semester. It is built on the research work which I have already carried out in the MS. I have published 2 papers on it also. It is about the cost estimation of software development, which I did in the MS. Uh, a framework which is known as COCOMO, Constructive Cost Model. It is a logarithmic model. The input was taken from that model and transferred into neural networks to optimize the output. In the current research, I am proposing an AI-driven sentiment-aware cost estimation, which would enhance the software project management with human-centric prediction. And again, this is the title of my research also. I will explain it in the coming slides. First of all, coming over to the introduction, uh, software cost estimation is a very important subject, has been a very important subject mainly due to the inefficiencies and failures which software developers and software industry faces. And the traditional models face these difficulties mainly due to the human factors which are involved in the software development, namely team cohesion, sentiment, and psychology, which have been till so far not worked out very deeply. The present research which I am going to take on is built on the this theme to bridge this gap by integrating AI-driven model by analysis of it into the cost estimation. My motivation for the research comes from many factors.
A few of them I have highlighted in this slide, which include advancing the body of knowledge to address the management issues of software, uh, to keep it to human-centered approach, to disrupt conventional software development life cycles, to develop an ecosystem for the development of softwares, and publishing, patenting, creating some real-world product, and last but not the least, to align it with the developmental goals of UN, number 9, which is industry, innovation, and infrastructure. Coming over to the problem statement, the problem statement comes from the traditional software models, mainly COCOMO, which I have already worked on, which does not account for the dynamic influence of human factors, which I have already highlighted in the first slide. And I want to integrate it with the artificial intelligence model, such that the human dynamism, which is always involved in the creation of softwares, it is accounted for and it does not affect the project development adversely. I have 3 research objectives, mainly to investigate the global impact of human-centric factors on the developmental cost of softwares, starting from the small to large-scale industries. By small, I mean the freelancers, and by large, I mean the actual software industry which are working across the many domains. Secondly, to develop a novel artificial intelligence-driven framework which could integrate the analysis into software cost estimation. And lastly, to establish a practical, scalable, and adaptable cost-efficient model, which will optimize the resource allocation, minimizing budgets, and transforming the software project management practices. I have consulted journals, papers, conferences, and some dissertations also. I will cover it in 3 slides. The first slide is about the journal articles. Here I have shown 4 articles, which are from the past 2-3 years, and the indexing of all these articles is as flashed on the screen. Most of these articles are well cited, high impact, and are indexed in all the agencies, including Scopus, Web of Science, and HEC. 3 of them are of the first quartile, and 1 is from the second quartile. And all of them are having a good score. They are relevant to the research, they are state of the art, and they have provided very good ideas for my research where we're going to be take on. This slide is about the conference papers. For the conference papers, I have again consulted 4 papers. All these conferences have at least repeated for more than 13 times. The highest being the article number 4, which was presented in the 40th conference, and it was published under the banner of IEEE and ACM both. The rest of the 3 papers have been published by ACM Digital Library and IEEE. Their acceptance ratios vary from 17% to 72%. They have good citations and good number of downloads. This third slide is about the dissertations, which although have not been published by some agency, but have been published by the universities. They were good publications. I just wanted to include in my literature review so that I could have idea that the researchers which have done some research relevant to my field in PhD and masters, how they have taken it on, what gaps they had found out, and how can I take it on further for my research. I have mentioned the degrees and the universities and number of downloads also. So this is the last slide. It is about the proposal I'm vouching for in the grant. I'm planning for HEC Grant Challenge Fund, which starts from 2 years and can be extended more than 2 years also. Its minimum amount is 20 million rupees. For that, I have already contacted an individual, Mr. Tamur, which you kindly provided with me the contact. He was currently not available in the country, and I am planning to meet him in the upcoming week. For that, I would be trying to have some collaboration for dataset and model validation with an objective of developing an AI-driven software product. For the distribution of funds, I have a broad breakdown in which I foresee that
Once the 20% goes to the audit, the remaining funds can be divided in between the data acquisition, processing, AI development model, publication, and further for the project management and miscellaneous tasks. And lastly, the expected outcomes of this would be prototyping the AI model for sentiment-aware cost estimation, industry collaboration, high impact publications, patent filing, and scalable framework for software project management. So that's all from my side. Thank you very much. Good, Hamza. Good work. So thank Thank you. you very much for the presentation. Or have you interacted with the Teradata? Yeah, abhi still in process. Sir, I have Sir, I have interacted with Sir Taimur. That I contacted him on the last Sunday. That day he was flying outside the country, so he told me that I could wait for few days, and after that, this situation, that the problem will be discussed, and hopefully it will be resolved. Okay, fine. Because his role is important from this perspective कि जो gaps आपने figure out करने हैं for addressing in your research has to be coming from this company side. Sir, exactly. ठीक है. और जो भी आप रिसर्च पब्लिकेशंस भी देख रहे हो उसमें आपने थीसिस देख लिए आपने पेपर्स देख लिए you need to see some of the developed projects as well on in this domain if you can find few. Right, sir. I will. Sir, I will find them. ठीक है. So again those would be Sir. mentioned by some of the related companies because they are using such like models. So you need to figure out okay, what they are Sir. using and what are the gaps in their models which you can address. Sir. ठीक है. Right, sir. रेस्ट इट्स एक्सेलेंटली Sir, मेड बिल्कुल ठीक. और आपने सारे पॉइंट्स मुनासिब तौर पे कर लिए हैं एंड इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस इम्प्रूवमेंट्स वुड बी देयर एंड वी विल ट्राई टू हैव मच मच बेटर देन व्हाटएवर वी हैव. जहाँ तक ताल्लुक है फंडिंग प्रपोजल Right. का उसमें एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जीसीएफ जो है ना वो असल में इज अ ग्रांट चैलेंज फंड विच फंड्स मोर देन 100 मिलियन. ये 200 मिलियन से प्लस के फंड वाले फोरम है. So you have to focus on maybe Sir. somewhere else, not at GCF. Sir, maybe company itself. Sorry, company itself से क्या कहना चाह रहे हो? Sir, Teradata. टेरा नहीं, मैंने आपसे ये कहा है कि जो एचईसी का जीसीएफ फंड है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि जी जीसीएफ सर. है. दिस इज अ फंड which accepts proposals more than 100 million rupees. It's a सर ठीक है. सर the बिल्कुल ठीक है. the biggest fund available to the from the HEC side. 500 मिलियन से नीचे नीचे जो सर है सर. उनमें से ये सबसे बड़ा फंड है. 500 मिलियन के बाद पीसी 1 लिखना पड़ता है आपको. सर बिल्कुल ठीक है सर. तो 20 मिलियन शायद इनके डोमेन में आता नहीं है. ये 80 मिलियन 100 मिलियन 200 मिलियन वाले ग्रुप है जो जीसीएफ वाला. तो आपको थोड़ा सा एक फंडिंग एवेन्यू थोड़ा एक्सप्लोर कुछ और करना पड़ेगा. नंबर 1. नंबर 2, जिसमें आपने डिस्ट्रीब्यूशन की है सर. उसमें आपने अपनी टीम की सैलरीज या ऑनरेरियम्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी है. सो वो भी ध्यान में सर रख. वो मैंने जो जो लास्ट पॉइंट में लिखा है सर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड मिसलेनियस में डाला है सर उसको. ओके वहां पर रखा हुआ बस ठीक है. इट मींस के दैट हैज इफ इट इज देयर सो इट्स गुड. सो बाकी ठीक है. जो बेंचमार्क्स हैं या लाइन ऑफ एक्शन है वो ठीक लग रही है और हम सर. इसमें और इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे इंशाल्लाह. राइट सर. ठीक है जी. थैंक यू वेरी मच हमजा. गुड वर्क. थैंक यू सर. सर थैंक यू. सर थैंक ओके जी. सो आपने सारों ने देख लिया हमजा का काम को सुन भी लिया. ठीक है. सो आई होप आपको एक अच्छा आइडिया हो गया होगा कि किस डायरेक्शन में आपने जाना. बट ही इज़ अ पीएचडी स्टूडेंट. थोड़ा सा एक स्टेप आपसे आगे ही होगा. आप लोग एटलीस्ट ऐसा नहीं तो इस जैसा कुछ ना कुछ कोशिश आपने करनी है कि चलते रहें साथ साथ आप ताकि आपको भी चैलेंज रहे सामने कि जी हमने इम्प्रूव काम करना है. सो हमजा आफ्टर हमजा एनीबडी आउट ऑफ द अदर्स जो कि इस वक्त ऑनलाइन है इफ दे वांट टू प्रेजेंट दे हैव द ऑप्शन. आमिर ने शायद हाथ खड़ा किया था तो आमिर यू कैन शेयर योर प्रेजेंटेशन. Yes, sir. आमिर अगर आप अपनी वीडियो भी ऑन कर सको तो इट वुड बी गुड. वी कैन सी यू इन लाइव. Sir, sir. ठीक है जी. थैंक यू वेरी मच आमिर. आप स्टार्ट कर सकते हैं इसको. प्रेजेंटेशन मोड पे ले जाएं अपने.
काम को। Sir, sir, is it visible? जी आप विजिबल हैं, यू कैन स्टार्ट। Sir, Bismillahirrahmanirrahim. Sir, the research work that I have planned in this during this ARM course is I have the inspiration of this research work during the previous semester and the semester before that, where I had taken the lecture machine learning and deep learning. The course is machine learning and deep learning. Sir, uh, during those courses, I have implemented one of the models on the RAM set, where I had carried out the comparison on the MNIST data set in the AI field, sir, deep learning model. And during the machine learning, I have also undertaken a few papers for reading, and I tried to implement it under the supervision of Sir Sajid Bashir. And I implemented and shown the result to Sir. On these inspirations, I have planned my research work on the topics explainable AI for time series forecasting, sir. My teacher would be Sir Dr. Sajid Bashir, and sir, the topic on which I shall be planning my research work is explainable AI for time series forecasting, sir, a deep learning approach for financial predictions and risk assessment. Sir, explainable AI is basically advanced version of AI. It is making deep learning models more interpretable. XAI is a collection of methods and processes that sir AI systems का ये जो advanced version है sir XAI, this is basically implemented in nowadays. Tesla is also implementing it during sir their drive. A real world example, I'll quote a real world example of XAI. During the drive of Tesla cars, when they have to take the decision during the driving for lane changing or emergency maneuver, XAI is the technology which will improve the trust of the passengers by giving the indication why it has taken that decision. So this is XAI, and forecasting on financial predictions is a time-based prediction. A time-based data is given to the model, and it predicts on the previous. It predicts on the previous data and gives you the future evaluations. For example, sir, if there is a crash in the market, and AI model will tell you how much crash it would occur. XAI, the model will tell you how much crash will occur. Sir, the introduction is, sir, I have seen the gap in the area, the problem and gap in four different aspects. One was, sir, data challenges. Sir, the data challenges for the AI, sir, it is highly volatile, sir. The financial data that is available nowadays, commonly available by finance data, sir, it is highly volatile and influenced by unpredictable events. For example, sir, international event happen. For example, Russia war. It will cause an impact on the economy, and it will be a decisive factor. Another gap which was observed is model challenges, sir. Sir, the model challenges for time series data that are available nowadays are specific. There are no comparison done so far in this field, sir. Another challenge that I have observed is black box nature of the deep learning. So deep learning models which are in the nature that no one is aware of the details how they are implemented. For example, during the neural networks, people are not aware how much steps has to be taken during the implementation of the models. Another gap that I have observed is hybrid architecture for robust forecasting. It is, sir, there are different factors which are affecting the financial outputs. For example, trading volume, news sentiments. I have mentioned the world wars and macroeconomic trends. These all are the factors which can affect the financial outputs or financial predictions. The planned prediction, the planned contributions I have in my mind, or the you can say the I have in my mind, XAI techniques. There are 4 to 5 techniques available, and people have worked on it. But a comparison has not been carried out. A hybrid nature of work has not been done in this field. And another contribution or objective I have planned is, sir, I shall be using
the model which is available right now, the Bayesian deep learning model, to estimate the accuracy, because it is a very well understanding model on the time series data. And sir, another thing that I shall be planning to implement, sir, is the new sentiment analysis on the micro indicator, sir. Sir, I have studied few journals on the topic, and I have done evaluation of these journals through the criteria you have. All these journals, most of them are available on Scopus and Web of Science, but few of the journals are not available on HEC, sir. The evaluation has been shared on the screen, sir. Highlighted as green, they are available as open source and could be available to anyone, and the red I have highlighted is not available publicly, it should be purchased. These are the journals. So total 10 journals I have shortlisted, and I have evaluated all the criteria, which I have gone thoroughly. Few of them I have not seen in depth, but that research topic, and they also are on the same lines which we have shared and are qualified on that, sir. But sir, for few there are not few factors are not available. For example, for the first paper financial report, impact factor is not available, sir. And sir, in the conference paper, this is one of the paper which was commonly available and as open source, and everyone could read it. And I have studied this paper, and it is a very good paper which is published in NICS conference, sir. It is a well recognized conference in AI field, sir. So that's all from my side, sir. Excellent, Amir. Good work और good topic. और मैं इसमें सिर्फ आपको ये कहूँगा कि इसी टॉपिक पे मेरे साथ लास्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट्स ने थीसिस किया था, रिलेटेड टॉपिक था, तो उनसे आप इस पे फीडबैक ले सकते हो, थोड़ी गाइडेंस आपको मिल जाएगी। हमजा, आपका जो टॉपिक था वो वाज इट मोर रिलेटेड, और बिलाल का टॉपिक ज़्यादा रिलेटेड बनता है इनके साथ? सर बिलाल ने इस पे काम किया हुआ है सर। बिल्कुल। तो मैं आमिर आपको इस पे सजेस्ट करूंगा कि यू कैन टेक द डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ बिलाल, हु इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस क्लास. He's enrolled into the PhD program, but his master's thesis was of the similar nature जो आप करना चाह रहे हो. तो आई एम श्योर आप उसके काम को लेके आगे चल सकते हो, या उससे गाइडेंस जरूर ले सकते हो, उससे नेक्स्ट एक स्टेप आगे जा सकते हो जिससे उसने काम किया हुआ. दैट वाज एन एक्सीलेंट वर्क. इट वाज पब्लिश्ड इन गुड क्वार्टाइल जर्नल्स. 2 पेपर उसके पब्लिश हुए, तो आप उससे एक दफा जरूर जो है ना इस पे इस टॉपिक पे बात कर लो. बट एरिया इज एक्सीलेंट एंड रीसेंट है, और इस पे काफी स्कोप है इस एरिया में काम करने का. So thank you very much, sir. चलें, ठीक हो गया आमिर. थैंक यू वेरी मच फॉर योर वर्क, गुड वर्क. जी, आउट ऑफ द अवेलेबल पीपल नाउ जो ऑनलाइन है, आशिर और साजिद, आप में से कोई प्रेजेंट करना चाहता है तो प्लीज गो अहेड. आप अपनी प्रेजेंटेशन अगर मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपकी खोल लूँ जो आपने प्रेजेंट करनी है. जी, हसीना, आशिर एंड साजिद, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम अस्सलाम, बताइए. सर मैंने जो है अभी अपनी प्रेजेंटेशन सही प्रिपेयर नहीं की. मुझे ये था कि थोड़ा सा मुझे आइडिया हो जाएगा कि मैंने अपना जो कलेक्शन की हुई है डेटा की वो किस तरह से करनी है. सो दैट्स वाई मैं आज प्रेजेंटेशन नहीं दे सकती. हाँ, ये है कि मैं अभी मुझे थोड़ा सा आइडिया हो रहा है, तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन जो है सबमिट करवा सकती हूँ कि मैंने इस तरह से बनाई है, और फिर नेक्स्ट क्लास में जो है ना मैं दे सकती हूँ. चले, नो इश्यूज. हसीना, आप काइंडली ये प्रेजेंटेशन जो हो रही हैं इनको देखें और जी पे अपने आप को अलाइन कीजिए, और हम आपसे प्रेजेंटेशन नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे. जो आज नहीं दे पाएंगे वो नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट कर सकते हैं. ओके सर, थैंक यू सो मच सर.
जी आशिर और साजिद, आपका क्या कमेंट्स हैं? साजिद, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई थिंक ट्राई कर रहे हो, लेकिन अपना माइक चेक करो। Assalamu alaikum, sir. Am I audible? जी वालेकुम सलाम। आप जी, आवाज आ रही है आशिर आपकी? Yes, sir. Sir, actually, I have the data. I have collected all the data. And I have deployed that data into the template that you provided me. But unfortunately, I have not been able to deploy that into the PPT file. So I'm thinking just I should present all my data in the next class. ठीक, नो इश्यूज आशिर, आप अगली क्लास में प्रेजेंट कर दीजिएगा। Otherwise, I can just share about my topic, relevant field, my objectives, and the research paper that I have been through so far. आप इसको थोड़ा रिफाइन कर लीजिए, एंड वीसी अगर ये बाकी लोगों के जब प्रेजेंटेशंस हो जाती हैं तो एंड पे आई विल गिव यू चांस। Okay, sir. Thank you. साजिद, आपकी क्या व्यू पॉइंट है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी, आवाज आ रही सर है? सॉरी, सर मैं ट्राई कर रहा था लेकिन मेरे ख्याल में हेडफोन्स में थोड़ा सा इशू था। सर अभी आवाज़ क्लियर आ रही है सर? जी, आ रही है आवाज आपकी। सर मैं प्रेजेंट करता हूँ सर, शेयर स्क्रीन करता हूँ सर। ठीक, काइंडली करेक्शन। आप भी रेडी हैं? तैयार हो जाए, अभी टाइम है आपके पास। कोई मुश्किल नहीं है, टाइम है ना, करें। सर ये क्या हम पॉसिबल होगा हमारे लिए जो क्लास में प्रेजेंट करेंगे उनका डेटा या फिर कुछ भी मतलब हम यहाँ ऑनलाइन बैठ के देख सकेंगे? आप अभी जो क्लास चल रही है, जब लोग अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आपको विजिबल तो है ना? उनका कंटेंट भी विजिबल है, उनकी ऑडियो भी विजिबल है, ऑडियो भी ऑडिबल। अ, नहीं नहीं सर, जो फिजिकल क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए। जी जी, उनकी भी मैं प्रेजेंटेशन यहाँ चलवाऊंगा, आपको विजिबल होगी, डोंट वरी। ओके। They are sharing their WhatsApp copies with me, and I'll display, and they will present. जी साजिद, आप स्टार्ट कर सकते हैं। सर सर स्क्रीन शेयरिंग सर आपको विजिबल है सर? जी विजिबल है, काइंडली वीडियो भी अगर ऑन कर लो, आई कैन सी यू इन लाइव एज वेल। सर मैंने कैमरा ट्राई किया लेकिन सर इसमें थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो नेक्स्ट टाइम सर ये भी चलो, इंशाल्लाह रेक्टिफाई कर लूंगा सर। ठीक ठीक है, चले स्टार्ट करें हम। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Sajid Akbar Khan. I am a student of MS Electrical Engineering, and the topic I have selected for my research work is optimization of renewable energy integration into existing power grids. The supervisor I have chosen is Dr. Ghulam Murtaza. I have studied two subjects from Sir Murtaza, and they were control system design and renewable energy integration. The agenda of my presentation will be first of all introduction, then the objectives. I have chosen some objectives, then the quality metrics of related journals which I have selected, and a few conference papers, and at the end references. Coming towards the introduction, the global energy landscape is undergoing a significant transformation as the world shifts towards cleaner and more sustainable energy sources. Renewable energy derived from naturally replenished sources such as solar energy, wind energy, hydro, and biomass has emerged as a crucial solution to address climate change, reduce dependence on fossil fuels, as well as enhance energy security. The increasing adoption of renewable energy is driven by technological advancements, declining costs, and policy incentives aimed at reducing greenhouse gas emissions. Uh, there are certain challenges in this field. For example, variability and intermittency, the grid congestion and stability issues, the energy storage limitations, the infrastructure constraints. These challenges, I will be discussing these challenges in details in my research paper.
there are a lot of advantages of integration of renewable energy into the grid. Despite these advantages, integrating renewable energy into existing power grids presents a range of technical, economic, and regulatory challenges. Unlike conventional fossil fuel-based power generation, renewable energy sources exhibit variability and intermittency, leading to fluctuations in power supply. For this topic, I have chosen some journal papers as well as conference papers. I'll be showing you a separate slide for that. Coming towards the objectives of my presentation. These are certain objectives which I साजिद, आपकी आवाज फिर बंद हो गई। आई थिंक देयर इज सम इशू विद योर माइक। अच्छा, आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया जी? देयर इज सम इशू विद हिज इंटरनेट अकाउंट, so इंटरनेट probably, तो लेट्स, इधर तो चल रहा है या उधर दूसरी तरफ कोई प्रॉब्लम है जी? इस ग्रुप में ही अगर भेज दीजिए, मैं वहां से डाउनलोड कर लेता हूँ। या चले, या इसकी आ गई है आपकी, अमार शाहीन नाम है आपका जी? ये 2 प्रेजेंटेशंस अब भेजी हैं आपने? सर एक मेरी है। आपकी है, ओके। बायलिंगुअल इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन जो है, ये किसका है जी? आपकी है, अमार। और एआई स्पेसिफिक हार्डवेयर आर्किटेक्चर जो है, ये है साद का। ओके, साद। ओके, सो आई थिंक साजिद जो है, ही इज डिस्कनेक्टेड, सो लेट मी कनेक्ट। आप में से किसी कौन पहले आप में से प्रेजेंट करना चाहेगा जी? अच्छा, फिर आप। एक मिनट में आपको निमंत्रण देता हूँ, आप खड़े होकर आराम से सामने से प्रेजेंट कर सकते हो। पावर पॉइंट। अच्छा, दिस इशू इज बीइंग फेस्ड। व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट्सएप से डाउनलोड नहीं हो रही चीजें। डायरेक्ट व्हाट्सएप पे ओपन करें, लेकिन वो अच्छा, यहाँ पे अगर हम इसको खोलें तो ये डाउनलोड ही करेगा ना इधर से डायरेक्ट ओपन, तो वो तो फोन पे तो कर लेता है आपकी, लेकिन इस वर्जन पे नहीं करता। आई थिंक देयर इज, डू यू हैव, या कनेक्ट कर लो, चलो आप लैपटॉप पे, ये कनेक्ट करने इसलिए मैंने उसको, या फिर आप मुझे यूएसबी में दे दें। प्रोबेबली देयर इज अ इशू विद द ट्रांसफर थ्रू पीपीटी। ये जिसका कोई मतलब एक्जी फाइल है शायद, इस वजह से, या कोई वजह है, कुछ ना कुछ है। आप दोनों कॉपी कर लें। जी, जो ऑनलाइन लोग हैं, आप में से किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं जी आप, जब तक ये यहाँ पे कनेक्ट करते हैं हम सिस्टम्स को। एनीथिंग टू आस्क आमिर और आशिर और हसीना? लेक्चर सारे आप लोगों ने देख लिए हैं जो अब तक के डिलीवर हुए हैं? यस सर, लेक्चर देखें। गुड। और उनकी समरीज भी आपने लिख ली हैं, शेयर भी कर ली हैं? यस सर, वो शेयर हो चुकी है। ओके,
चलें, दैट्स ग्रेट। साथ साथ देखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप पेंडिंग करते जाएंगे तो पेंड होने पे सामान बहुत जमा हो जाता है, फिर एक आखिरी दिन नहीं देखी जाती चीज़ें। तो ये जो नोट्स बना रहे हैं आप, इनको अपने साथ रखें। दे विल बी असिस्टिव ड्यूरिंग योर एग्जाम्स, क्योंकि एग्जाम्स में से जो चीज़ें मैं पूछता हूँ वो दोज आर मोस्टली फ्रॉम दी लेक्चर्स, राइट। जो स्लाइड्स इटसेल्फ हैं वो गाइडेंस के लिए ज़रूर है, लेकिन स्लाइड्स पे से बहुत कम चीज़ें पूछी जाती है, ज़्यादा चीज़ें लेक्चर के अंदर से आती हैं। ठीक है? तो स्लाइड भी देखें, बट फोकस रखें लेक्चर कंटेंट के ऊपर। सर एक स्टूडेंट ने आंसर शेयर किया, लेकिन मैंने आपको रात में शेयर कर दिया। क्या नाम है उनका? सर आई थिंक उनको एक क्लियर है तो वो नहीं देकर कोयटा है ये। कोई बात नहीं, आप उससे शेयर कर लीजिए जो भी थे। अगेन फिर तो आप उसको रिवाइज करके शीट को सिर्फ उनका कंटेंट भेज दीजिए मुझे। वो जो जिप फाइल है वो अगेन शेयर करूँ? जिप फाइल उनकी शेयर कर लें अलग से, उनकी जिप करने की जरूरत नहीं है ना, वो तो बाकी आ गई है ना मेरे पास। सिर्फ उनकी जो भी नया कंटेंट आया है वो मुझसे आप शेयर कर लीजिए और एक्सेल फाइल को अपडेट कर दें। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी साजिद, आप कनेक्ट कर सकते हो अगर आप। सर सॉरी सर, आई एम स्टेशन एट कश्मीर सर, थोड़े से नेट इश्यूज होते हैं यहाँ पे। कोई बात नहीं, आप शेयर करो। सर यूएसपी आपने कर रहे कॉपी? कर लो। जी विजिबल है आप साजिद? Sir, so sir, these were my objectives which I have selected, sir. Uh, I have selected some journal papers which are as flashed. Out of these journal papers, sir, all are almost good quality journals, and on which I have researched. They are indexed on Scopus as well as Web of Science. All of them are available on HEC as well. The number one, renewable integration into power systems, the title of this paper is covered in journal name Energy Reports. Only this one was in quartile 2. Otherwise, the rest all were covered in quartile 1. The SJRH index, impact factor, side score, and JPR are visible, sir. ठीक। Sir, for now, I have selected these 5. I am working on others as well, so I'll be mentioning them as well in the next presentation, inshallah. ठीक, बिल्कुल ठीक। So these are some conference papers which I have selected. Sir, only one was, I got only one on Scopus, the rest were not there. But I am working on them, sir. If I get much better conference paper than these, so I will also be mentioning them. Only the second number was indexed on Scopus, the rest were not there, sir. However, the publishers are, sir, well known. For example, the IEEE IET conference proceedings. Sir, these are well known publishers. That's why I have selected them, but I didn't get these conferences on Scopus. ठीक। Sir, that's all from my side. If any questions? नहीं ठीक है साजिद, आपने सुपरवाइजर्स को ऑन बोर्ड लिया हुआ, डॉक्टर मुर्तजा से बात की हुई? सर मैंने बात की है सर उनसे. Actually, sir, I was working on. I was not going for research. I was doing research. Sorry, sir, I was doing course work. But now I am trying to do the course work. और उसके बाद अगर सर मुझे टाइम मिलता है तो फिर मैं इंशाल्लाह रिसर्च की तरफ जाऊंगा. अभी तक मैंने थीसिस का सर वो नहीं किया हुआ था. तो ये तो मैंने सर एक टॉपिक सेलेक्ट किया था सर, मुर्तजा से मेरी डिस्कशन भी हुई थी. ठीक। तो इसको सर आई एम वर्किंग ऑन इट सर. नहीं ठीक है, टॉपिक इज फाइन और एरिया भी अच्छा है, और ये आगे फ्यूचरिस्टिक डोमेन में आपके काम आएगा। और आई वुड रेकमेंड कि थीसिस जरूर करो, बिकॉज कोई पता नहीं होता बाद में आपका पीएचडी का प्लान बनता है, तो उस टाइम पे अगर थीसिस ना हुआ तो आपको कोई एडमिशन नहीं देगा। सर ठीक है, तो बेहतर है कि स्टेज पे थोड़ी थोड़ी सी एफर्ट करके, ये आप मुश्किल कड़वा घूंट है लेकिन पी लो। ठीक हो गया सर.